Yes. Yes. Neither is evil. Yes. Excelente, a veces uno casi dice que va, aquí estoy, uno de fábrica, this why they were Good evening, everyone. What is the test paper all taking? So, anybody? Three people are going to them. Sign. 9 across. So, take it. आते मस्ती कुछ डाला गया इधर कुछ तो टेक्निकल बोल we were doing vegetation completed water resources. Oh my God, why we are so behind? Completed. Oh, that's good. To pick up my KK branch, sorry, other branch ahead of the other branches. Agriculture is finished, correct? Yeah. And उसके बाद water के बाद क्या? I think water के बाद agriculture ही है ना? नहीं, वो energy resource होता है, conventional and non-conventional. Okay, put that in. You write energy resource as the heading and break it into two. There are 3 chapters here. One is conventional, another is non-conventional.
make the chapter heading like this only. Easy for us to to complete both the heading together. Which school will be coming with July exams? School. Many are there. Many are there. Many? Right. They will all be rushing up. Okay, July first say again. And then and we have finished your dose of portion. And which is the next school? July ke baad, July 14th. August time is there. What else? Nobody else is going for the exam? What is that? Date? तो फिर अगस्त के बाद फिर है July is the issue I'm saying, है ना? Because I'll be meeting directly next Thursday means then we are in the month of July. Always keep informing the coordinators here about your school exams. But then lectures will you understand what I'm saying? 5 will be coming, 5 will be going. Okay, put the heading. And say ready and I'll discuss. Right? Quickly put the heading, put the topics. If you are a little bit hurry or quick enough, you can copy down what is there in the book. The conventional energy, your textbook wise, you tell me. First one, what is given? Whole is it? Sure. Second? Mineral oil, like okay. And that is what. What else? Use your textbook. Morning star will do. Okay. Hydrogen power. Because I have to discuss all those. And that's it. Then there are dams. Here only. I do. And then this. Now let us, boys, give me the list of non-conventional. The first one will be solar. As per the order you tell me. Volume में है आगे जा, non-conventional आगे. Next chapter here. First one is solar ही रहेगा. What is that? Solar ही है ना? Second one. Third one. Okay. Okay. Next, that's it. Nuclear and biomass. Correct? Okay. Now the board looks more, informative. ऐसे ही लिखना in your first page. So 2 or 3 chapters together you are studying in only one. Let's be ready for understanding what is all this, what is conventional, what is non-conventional, advantages and disadvantages. Simple. इधर कुछ CGHC करके है ना, green. Green fingers. है ना, खंडर में है. What is that full form they say? One of my colleagues has come to work here for 11th and 12th. CHG some. What is that? What is GMT stands for? Green Global Congress. Anybody is from there? It's a ICSE board is there. Only. सारा स्कूल आया है. खंडर. CGFC. Shall I start? What my dear doing? क्यों यार ये 6 करके हमेशा मुझे वेट कर. Happy to hear you. फोन में बात करनी थी.
So whenever we talk about these two energy resources, na, relax. We understand only one thing. Is energy resource an important for a country like India? Very important, very important. Relax relax. I know people are coming in. क्या है van वाला late लेकर आता है correct? Relax. I'm not going to. I know that. And no writing also today. Relax. Only क्या बोलते हैं आप लोग बस करना है. नहीं explain कर दीजिए explain. So when we understand this energy resource, I think science is the first thing saying ki I am the first important subject of your life. Do you accept? Without science, nothing. Without science, nothing. फिर mathematician jump in. बोलता है zeros and one के बगैर तो दुनिया बिल्कुल क्या है शून्य है. फिर एसएसटी बोलता है अरे मैं भी तो है तू तो हिस्ट्री है पास से तू ज्योग्राफी पता नहीं हर जगह थोड़ा थोड़ा सा jack of all trades. So I remember my science teacher teaching me this chapter. Energy मतलब क्या है? I said क्या है? You get up. I said I got up. And she told me to sit down. I said sit down. Again she told me get up. मतलब what is this shit? This is energy, my dear. Like ये बहुत जरूरी था. And she is right only. Right? So what energy makes you to do? Work. हाँ फिर हम लोग डेफिनेशन आता है. P क्या है सर? K क्या है? आपको मालूम नहीं सर पोटेंशियल डिफरेंस हमको सिखाया काइनेटिक एनर्जी सिखाया है ना बहुत सारा फिर न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है देन लॉज ऑफ फिजिक्स देन दिस विल बी द लास्ट डे एंड नेक्स्ट वीक आप प्लीज कम ऑन टाइम ओए रवि गोला सब लोग को बोल रहा हूँ और भी कोई आने का चांसेस है क्या बोल दो आई कैन वेट. So when we little bit take away from that topic, I'll explain that the word conventional and I'll explain the word non-conventional. People tell me, sir, dynamic is the one we want in place of conventional, non-conventional. Is it correct? Can I use the word non-conventional ke jagah par dynamic? Not energy, huh? Just what I'm saying. Is it dynamic? Are you catching what I'm saying? What is conventional according to you? Forget about this energy. Very old. है ना चल रहे सर और खींच रहे सर. अभी जैसे मैंने आज किसी स्टूडेंट को पूछा लाइफ कैसा है मतलब कैसा है लगे लाइफ कैसा है मालूम मॉर्निंग से इवनिंग स्कूल एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू गाइस एंड घर जाते फिर दे गाइस उसे तो दे गाइस मम्मी और पापा अभी से मेरे ड्रीम के पीछे पड़े हैं. ड्रीम किसका है आप लोगों का हो तो पापा मम्मी कर रहा है एंड चेस कौन कर रहा है पेरेंट ही करेगा और कौन. और बच्चा बोलता है मेरा ड्रीम तो टू ब्रेक फ्री. I cannot forget that certain scenes of some Hindi movies in which that the boy is into that engineering, na 3-dash movie. But that the character is very interested in catching what is that zoom the photographer. But पापा ने बोला है तो इंजीनियरिंग करना है और मम्मी ने बोला है मेडिसिन में घुसना है जाओ. एंड बच्चा ये दोनों से भी बाहर है फिर उसको एनर्जी आता है कहाँ से तो कब आता है फर्स्ट ईयर में 2 बार फेल हो गया सेकेंड ईयर में 4 बार फेल हो गया. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. थर्ड ईयर इंजीनियरिंग बोलता है बच्चे को घर पे बैठ मतलब क्या उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं आया और आपने डाल दिया. हैव यू विजिटेड एनी ऑफ द आईएम्स इन इंडिया? आईआईटीज गया है कभी? कभी पेरेंट्स अगर आपका इन्फ्लुएंस आई हैव गॉन मेनी टाइम्स टू पवाई पढ़ने नहीं गया अंदर कैंडिडेट्स को पिकअप करने गया बेचारे वो बच्चों का लाइफ देख के हमको टेंशन होता है. 7 बजे से बोलते सर मैं ना कल क्या कर रहा था सर एंड मैं मेरा एक फ्रेंड है उसका कंपनी का प्रोजेक्ट के लिए वहां से कुछ कैंडिडेट्स को लेता हूँ स्टाइपेंड वगैरह और ये साला उसको देता है 1000 रुपए. मैंने बोला अरे वो आईआईटी का प्रोजेक्ट है तो क्या हो गया ज्यादा है मैंने 500 ही देता था और वो आईआईटी है 1000 रुपए के लिए प्रोजेक्ट के लिए काम कर बोला ये इंडिया का फ्यूचर आईआईटी है तू चुपना 1000 रुपए बहुत हो गया. एंड बेचारा 3 रात बैठ के वो प्रोजेक्ट करके देते हेलो सर फिर ये भाई साहब बड़ा सर्टिफिकेट बना के ठप्पा मार के दे थैंक यू सर थैंक. और उधर का जो डीन है ये साथ दिन सर और भी कुछ रहेगा ना बुलाओ सर इधर बेचारा वैसे भी पढ़े ही रहते हैं. बोले कौन आईआईटी है कुछ काम नहीं है ऐसे ही पढ़े लुक एट द फ्यूचर इंडियंस. एंड फिर हम लोग यहाँ से बोलते हैं आईआईटी बेटा ये है आईएम्स में वो है कुछ नहीं अंदर आके देखो everyone having their own sweet story. It is not story is not sweet, but सब अपना अपना दुखड़ा होता है.
फिर बोलते सर मुझे एनर्जी चाहिए, मतलब कौन सा एनर्जी, कन्वेंशन चाहिए कि नॉन कन्वेंशन चाहिए, नॉन कन्वेंशन ना, कुछ नया, डायनामिक. व्हाट इज डायनामिक? एवर चेंजिंग and which is very flashy for you. You know what is flashy? I mean, if I say who doesn't want to become a crorepati in next 2 days, सर कौन नहीं बना, सब लोग बनना चाहता है. बट अगर सब लोग अगर 2 दिन में करोड़पति बना तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. So whenever I explain this non-conventional, I feel it is you guys need to be pumping your resources here. I don't know how many defense equipments India is manufacturing after India has hit our neighboring country, the so-called, I don't know the name that country. हर 2 दिन में एक नया कंपनी आ जाता है. अभी महाराष्ट्र में एक नासिक में एक स्टार्टअप कंपनी ने एक ड्रोन बनाया है. That drone is not manufactured even by Israel, the brightest mind of the world. And Nashik people are very proud. बघा आमचा माणूस. And जो बच्चे ने बनाया है, hardly they are all in their 30s. सूर्या कंपनी का नाम पे बताता हूँ. हाँ, कुछ तो छोटा सा कंपनी है जहाँ 2023 IIT काम करता, और उन्होंने इतना अच्छा ड्रोन बना दिया. तो ये वाह, क्या मिशन चल रहा है इंडिया में. Is it dynamic for you guys? Yes. Maybe like you down the line, maybe 3 years down the line or 4 years down the line, you start becoming an R&D. What is R&D? And you are adding to the DRDO of our country. Anybody? What is DRDO? Development Organization. तो लड़का जो स्कूल में सबसे मस्तीखोर, बोलते सर वो मैं काम कर सकता हूँ सर. बोले क्यों? पूरा स्कूल को तोड़ मोड़ के मैंने रखा है. हमको मालूम है कहाँ बेंच के नीचे लवंगी लगाना है या टीचर का चेयर के नीचे एटम बॉम्ब लगाना है. एटम बॉम्ब सर वो लक्ष्मी बॉम्ब है सर, एटम बॉम्ब. हैप्पी दिवाली मनाने के लिए. So we believe energy is you guys. You accept? तो बोलो इतना बड़ा भाषण. You're not energy to me. चलो जाने. So we say the word conventional. The first one, coal. Everybody knows what is coal. India has 4 main types of coal. Now what are they? Bituminous. What else? Lignite, peat, and anthracite. Anthracite से start करने का, A for apple वाला. Anthracite is the best. Next comes bituminous. Next comes lignite, and next comes peat. And you know, coal is a major source of energy for a country like India. Do you accept this? अभी आपका और मेरे घर पे जो ये भी घर का जो सप्लाई है, it is only 240. 240 क्या है? Volts है ना? Whereas an industry require minimum 1500, sometimes 10,000 volts. वो कौन बनाता है? मिनरल थर्मल पावर ही बनाता है. लाइक टाटा का इन हाउस है हर जगह, उनका हर कंपनी टाटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही चलता है. टाटा पावर सुना है? दिस इज कोल फॉर इंडिया. It is not only mining industry but also energy production. Why it is in the conventional type? Because before the dams were constructed, है ना, घर के लिए भी हम लोग कौन सा पावर यूज करता था? थर्मल पावर यूज होता था. Second, we have mineral oil. What is mineral oil? Or we say crude oil. What is crude oil? We get first petroleum, second diesel, kerosene, paraffin wax, naphtha. I can keep on saying. And there is high level of filtration. I think chemistry में एक chapter है आपको mineral oil extraction का, on what Fahrenheit, the heat, the level of separation is there. So today India is maybe the 4th largest, maybe not exact food producer, but first big demand. Like 2 days before that, Iran fellow, the ruler of Iran, he said he's going to close the gate of one of the small air passage, not what a through which तो जगह का नाम भी है उजाफा सब कुछ तो था. And he said अगर वहां से वो पोर्ट बंद हो गया, गल्फ को, एशिया और यूरोप को सप्लाई ऑयल करने का गेट बंद. इंडिया वाज आल्सो वेटिंग. फिर हम भी क्या करें? तो रशिया बोला डोंट वरी, आई विल सप्लाई मिनरल ऑयल टू यू. बट आएगा तो वही रास्ते से. उजैफा पोर्ट, आई थिंक, आई एम वेरी केयरफुल. उजैफा. So that is nothing but which oil export we are saying? Mineral oil. But you can tell me this, sir, why CNG is a conventional? इधर आना चाहिए ना. CNG उधर क्यों है? You know what is CNG? Full form बोलिए जल्दी. How it is conventional then? There's a story behind the development of this gas. You know that? There was a scientist whose name was Humphrey Davis.
उन्होंने क्या बनाया था माइनर्स के लिए, ये साइंस में है, हम्फ्री डेविस सेफ्टी लैम्प, नहीं सुना? When this mineral oil and coal used to be dug from deep, there used to be a gas which was colorless and odorless, and all of a sudden bust of that underground mine. Then the scientists came to know there is a gas which ammonia bhi bol sakte hain, CH4, not ammonia, NH3. Sorry. So this gas was to be evolved with the extraction of mineral oil, but directly from the mines. So we are using natural gas since long time. अभी Humphrey Davidson आप तो नाम ही नहीं सुने. Now there is any danger of busting inside that mines. Now every helmet is fitted with a torch bulb. इसीलिए वो नहीं लेके जाते. So he invented a safety lamp where they can carry it when there will be no blast. Okay, so that is CNG. This everybody knows. Sir, along with thermal, we are also. ये मालूम है क्या होता है? India is having around 12 multi-purpose dam. अभी ये number भी ज़्यादा है. Like we have Hirakud, the world's longest, right? Then we have Damodar Valley Corporation. So we always believe whatever I had explained, energy resources, is a part of conventional or non-conventional. Are they generally environmental friendly? No, they are generally non-friendly. And generally they are in a limited quantity, we can say. And it will add to the environmental destruction or construction. Then why are we using it? Because they are more dependable as compared to non-conventional. You want me to go into detail of any? I'll be going one by one. Now, in opposition or in face to face, we have the non-conventional. अभी आ रहा है हम लोग डायनामिक में. तो डायनामिक में मतलब मुझे हर साल लगता है कि हमारा स्टूडेंट यूपी का हमारे लिए बहुत डायनामिक है. आप लोग है? So what is a dynamic? So next year we will be coming with our parents, not only with a pack of sweets or whatever you bring it on, that is up to you, but to collect the medal from another sir. Regarding what it will be? The toppers. It is not the students, but it is their marks. It is not the students, it is their parents who are very much happy. फीस पूरा वसूल किया और हम लोग कुछ जगह पर अगर सर कैश प्राइस रिटर्न देते हैं कितना ठीक है चल 75. So that is a big lucrative thing for you guys. I remember whenever I used to be a topper during my school days, मुझे भी सबके सामने बुला के प्राइज मिलता था. एक पेंसिल का बॉक्स, एक लंच बॉक्स. फिर मेरा मम्मी और पापा को भी इनविटेशन डाल कर यू मस्ट कम 23 बैच में तेरा लड़का अकेला. और मेरा मम्मी को अच्छा. और जैसे वो गिफ्ट मिलेगा ना मैं तो कभी देखता भी नहीं था. माय सिस्टर यूज्ड टू कम टू अटेंड द फंक्शन. क्या मिला और ओपन करके लंच पर ये तो घर पे सबके सामने. हाँ ठीक है. What does it mean even getting a pencil box from my director? That also atomic energy power station जो central government के हाथ में है. And sometimes I remember Chidambaram was there in the function. This Chidambaram, that time he was the finance minister of India. So मेरा पापा बोले को मालूम है क्या चिदम्बरम आया है. मतलब वो कौन होता है? इंडिया को फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है. मतलब वो तो नहीं रहता है. He sits in one corner of the particular VIP box, but he is there in the function. So what is the dynamism? That you are awarded and rewarded in front of so many people. What does it mean? Something new you are doing for the country. Which is that? The first one as against this one, solar. Is it eco-friendly? Is it continuously I can use? Is it and something causing pollution? But the problem is that the initial cost, you feels are not good, sir. High. But then सबका ये generally long run cost क्या हो जाएगा? It becomes cheaper. Why does long run we are all worried? Like you guys. सर जब हमारा पूरा वेकेशन मेरा दोस्तों ने मजा किया हम आप लोग के साथ सर थोड़ा मतलब सर मतलब लेक्चर्स के लिए आया है ना. But mainly worry for next coming April or April I think exams खत्म हो जाएगा. फिर भी max to max March में हो जाएगा. Then what are we going to do? मम्मी ने बोला अभी से इंटीग्रेटेड में जाना. मतलब एक महीने छुट्टी ले ले यार इसमें क्या बड़ा बात है. So there are some branches ROUT. They are saying नहीं sir I will do plain 11th, plain 12th
and that also going to a particular so-called good school. And you will enjoy your life. But sorry, there are some concepts integrated के बेचारे 2-2 घंटे के 4 लेक्चर अटेंड करता है और उधर हर वीक में टेस्ट है. सर इससे अच्छा तो 10 था मेरा. एंड इतना भी आप मेहनत जो कर रहा है, इट इज ओनली फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मेडिकल एंड एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ व्हाटएवर. हाँ, उसके बाद ये टॉपिक आया बाद में फिर नया टॉपिक आया. क्या हाल है. So there are many students now voluntarily saying integrated don't want to. फिर तू independent पक्षी है. 11 तो लड़का लड़की इतना एंजॉय करते हैं सर, मजा आता है सर स्कूल में, कुछ टेंशन नहीं. क्यों? मैडम ने पहले ही बोल दिया इतना मार्क्स टू पास. 12th का टेंशन लेगा वो भी कभी 1.5 साल के बाद. बट इंटीग्रेटेड राइट फ्रॉम डे 1 एडमिशन लिया. अभी आईएम्स में जरिए सपना. अरे छोड़, अभी तो बेचारी वो बच्ची 10th करके आ रही है, फिर ये इंटीग्रेटेड उसके सर पर बैठ के तभी सब. आई डोंट वांट टू नेम XYZ, यू नो बेस्ट. और कुछ लोग तो बोलते हैं सर 6 लाख का फीस है सर, आपका बच्चे के लिए 1.5 लाख, जबकि फीस ही उधर 1 लाख की है. और आपसे 50,000 एक्स्ट्रा भी ले लिया और आपको ऐसा महसूस कर रहे थे वो क्या है, डांस प्रोग्राम में विंग्स लग जाता है. उम्मीद 6 लाख था ना तो 1.5 लाख कुछ नहीं. ऐसा ऐसा प्रोमिसेस करेगा. आई डोंट वांट टू नेम. एलन है, ये है, वो है. इंडिया का नंबर 1 है. इंडिया का नंबर 1 तू नहीं, फीस हमसे लूट के लेता है. एंड व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू आर डूइंग? सर हम लोग 9 का कर रहे हैं सर, 10 का कर रहे हैं, फिर 11 का भी कर रहे हैं, फिर 12 का भी कर रहे हैं. बेटा 4 साल का पढ़ाई 1 साल में होता है सर. फिर 1 साल में सोच लो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर कुकर आर यू इन. एंड अल्टीमेटली क्या बोलता है? फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा? सेकेंड अटेम्प्ट भी होगा, थर्ड नहीं तो फोर्थ अटेम्प्ट में मैं बोल सकता हूँ कि मैं कहीं तो बैठा. अपने यूटी स्टूडेंट का बोल रहा हूँ, नॉट विद देम. आई विल से फिर बच्चा फिर 4 साल MBBS करता है, फिर इंजीनियरिंग 2 years करता है, उसके बाद फिर उसका लाइफ स्टार्ट है. उधर भी स्ट्रगल. Why is it struggle? Because there are a lot of resistance. Today I was doing some European economy, I was attending some programs and मैं खुद भी उसमें involved हूँ. So they were saying in Europe you become an engineer, how you are a doctor. आपके नाम के आगे डालते ही बोला था Mr. Engineer please come here. And government of Europe उसको register करना बोलता है पूरा engineering certificate. And फिर 2 साल वो किसी engineer के नीचे काम करते थे. And he becomes a powerful. And you know which engineer I'm talking? He's a full-fledged AI engineer. You understood AI? जो इंडिया का आजकल हॉट टॉपिक है. And the country is no other country, I think मेरे से ज्यादा आप लोग निकल लेंगे, जर्मनी. And उसका 4 साल का पढ़ाई फुल फ्री. He is paying only 380 euro बस. और इधर हम लोग 15 लाख 20 लाख 50 लाख पकड़ के आपको डाल देते हैं. What is all this? Dynamic world which we are doing. And let me tell you, after 12th there are so many countries in Europe which give you 100% free studies. उसका तरह सर्टिफिकेट भी ऐसा रहना चाहिए. हाँ, इंडिया से थोड़ा दूर रहेगा, वो चलता है सर. We are very happy. And you should visit some parts of Munich, some parts of Berlin, especially Frankfurt. आपको मालूम पड़ेगा ये जो हिस्ट्री वाला डिक्टेटर कंट्री आज दिखता कैसा है. हाँ, it is true. ऑटो के लिए दुनिया में नंबर 1 जर्मन. You know Volkswagen का वो बीटल मॉडल, the model was developed when Hitler was alive. तब से वो Volkswagen कंपनी नंबर 1 है आज तक. तो सोचो अगर आपको लग रहा है कि ऑटो इंजीनियर बनेगा तो अपना बनेगा सर. And that also you will get a very high qualified certificate from that European country. So that is solar. As India is the 4th largest producer. Gujarat, we have more than 2 independent towns in a district, 100% solar. And slowly from Gujarat, they are extending to Rajasthan. And slowly, I feel even Maharashtra may be solar power stations are. But Maharashtra is not entertaining so much. If not, solar power can be one of the best. Next, we go for wind. Wind, or what do we call it as wind mills. Have you heard about this windmills energy? In India, they might have shown a place in your own textbook. It is in South. The place is like this. I hope whether you're able to remember. Okay, to a place called this. Anybody pronounce these 2 towns of South? Madurai to Nagarkoil, the place. The India's largest wind farm cluster. You know what is wind farm cluster?
At a time there will be 100 to 200 windmills operating. मैं टाइम मिलेगा तो मैं आपको विंडमिल का उसका डायग्राम पे दिखाता हूँ, डायग्राम में वीडियो दिखा देता हूँ. You'll see how is the blade and how cheap and how best is this wind energy. Next we go for tidal. What is this tidal? It is the long, or we say longitude. No sir, it is the tidal ranges. Which are ये थोड़ा सा इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, with specific construction at the shores of the sea, where whenever this high tides are there, they try to rotate the turbine of the particular unit. And once the turbine starts rotating, this energy is produced. We have it in off coast of Gujarat. Tidal energy हम वहाँ भी बनाते हैं. Next we go for geothermal. Which part of India? One is in Ladakh. उधर दिया भी है टेक्स्ट में. It is called Puga Valley. And एक हिमाचल में है, उसका नाम है मणिकरण. And हमारा I think Reliance का कंपनी उधर कर रहा है, Reliance and Tata, and very quickly we will have this. The word is geo, light, thermal, from the inside the earth. So they try to fix it the certain, I don't know what is the fixture, I should tell it in geography. The steams are tried to be used. Once that steam gushes out, we have geothermal energy. So you remember only two places. Experimental पे है, अभी बहुत जल्दी इंडिया इसका टैपिंग भी करेगा. So which are the two places? Come on everyone. Ladakh, Puga Valley and Manikaran in Himachal. Okay. Nuclear energy. I hope any bright science students can explain me. So nuclear energy क्या होता है? He is only saying fusion and fission. Uranium 235, correct? And uranium 238. ये दोनों क्या है? Radioactive isotope substances. Through controlled which reaction? Fission or fusion? Fission reaction inside of which reactor? A nuclear reactor. For the first time India produced energy under the name of Dr. Come on, Homi Jahangir Baba. He was a person founder of VARC. आप चेंबूर एरिया अनुशक्ति नगर जाएगा. This is the biggest. मेरा पूरा schooling and मेरा पापा was one of the employee, not the highest employee. I had the dream of, not dream, I visited this entire place many times during my school days. Baba Atomic Research Center. ये controlled reaction है. आज अगर कोई दुनिया में अगर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का टेक्निक है, तो that is nuclear. So even like, what is his name, Lal Bahadur Shastri, the death of even this person is a mystery. And he was flying in so-called airlines. ये सब अमेरिका ने प्लान किया है, CIA, because America doesn't want India to become a superpower in which energy? Even nuclear. So today we have Tarapur in Maharashtra. So now Tarapur, at least now, is the biggest nuclear power station in India, because it produces, if I'm not so wrong, 24 megawatts electricity using this nuclear. Okay. Last but very important and very cheap. This you might have studied in your science again. Biogas मालूम है? What is the difference between biogas and gobar gas? Biogas, human waste, animal waste, plant waste, and you might have seen वो construction वो tank का diagram बनाया रहेगा, आप लोगों ने pipe बनाया रहेगा. And the slurry of this biogas, it's a perfect or an excellent manure. Have you heard this? And normally it is in a local area or in a rural area, and it has a twin purpose. First purpose, energy no doubt. Second purpose, इसका जो slurry बनता है waste, it is used as a manure. So whatever I've spoke, especially costly are the solar and nuclear, correct? And which is very cheap, biogas. And normally ये rural areas में दिखता है. City में मैंने कहीं biogas नहीं देखा है. और आपके घर में जो गैस आता है वो दूसरा है. That is that pipe गैस है ना, वो महानगर गैस है, वो बायोगैस नहीं है. क्योंकि ये पाइप गैस जाता है तो बचा होता है, बायोगैस है, बायोगैस नहीं. Is it okay? चलो, let us mark from your volume only. Take out the first chapter, conventional. It is on page number 24, I think, correct? Coal, I'm reading. So you mark certain words. Most important mineral. In between, don't talk. What is it? Hey, volume nahi hai to then I have to drive you up.
Second, it is combustible solid. Stratified rock. Yeah, what are the meanings of these four words? Combustible, आग लग सकता है. Solid stratified मतलब क्या है? Its composition. How many of you know the difference between a charcoal and a coal? Charcoal is very ordinary, जो आप लोगों को cigarette house में मिलता था. Coal is very dangerous. It's only in the industry you can use it. It is very hard and stony. अगर आप घर पे अगर coal अगर burn करने का try भी किया ना, there might be a blast. Especially anthracite. They are very dangerous. It is formed due to underline accumulation of ये only open bracket करो. Deltas, coastal, सब नहीं चाहिए. Up till areas. Then come to the last point, based on the amount of carbon. Underline that word amount of carbon. Moisture and volatile matter. Hey, what is this word volatile matter? क्या है? There is one scientific word I think you might be better. Ignition temperature सुना है? Ignition temperature. मुझे ब्रेक के बाद बताओ. अभी नंबर डाल दो. Varieties में 1, 2, 3 and 4. Anthracite, bituminous, lignite and peat. Abhi only few words. Open bracket. Hardest, shiny and lustrous. Close bracket. Only underline 90% carbon. Very good and very costly. Second, hard, black, compact. Close bracket. Only underline 50 to 80%. Next, 40%. Good deal of moisture. उधर एक बार एक क्वेश्चन आया था. लिग्नाइट में इंडिया में एक ही कोल फील्ड है, वो तमिलनाडु में है. उधर लिख दो तमिलनाडु. ओनली कोल फील्ड. एंड जगह का नाम वो भी लिखता हूँ, because it is a very important place in Tamil Nadu. It is called as Neyveli. Neyveli in Tamil Nadu. Lignite पूरा इंडिया में एक ही कोल फील्ड है. Neyveli. अच्छा, he's from there, is it? Then from where? Acha, that's close to that area. That is why. Hey, listen. Ambasamudram where? Neyveli में ही है. नहीं, no idea. Tirunelveli, na you are from. Chalo, next. Then come down. Peat. Underline. First stage of transformation. Underline wood to coal. Least carbon. उधर लिखो below 40% लिखना. So which is the best coal and which is the least coal? Peat. Peat मतलब उसका पहला स्टेज है जब वो wood से चारकोल में बनता है. Directly go to anthracite, वो सब नहीं चाहिए. Come to distribution. It occurs in rock sequences. Only underline rock. And geological coal field in India. Underline one is Gondwana, another is tertiary. I think Gondwana के ऊपर लिख लो 2. अच्छा नीचे है. GCF underline 200 million years. And it accounts for 98% of coal in India. And any two tick kar lena. Damodar and Mahanadi is enough. Then come to TCF. What is TCF? Come on everyone, TCF. What is GCF? Everyone, Gondwana, come on. How many million years old? How much percent in India? What is TCF? How much million years old? How much percent in India? Only 2%. 98 तो वो है. ठीक है? Underline this area or open bracket. Assam, close bracket in J&K. अच्छा Tamil Nadu को डाल. Very base. Then come to advantages. It is a source of power. उधर लिखो prime source of power लिखो. And किधर है? Normally machines, trains and ships. ये ships में अभी भी होता है क्या coal? अभी 90% बंद है. Have you seen Titanic movie? हाँ, उसमें वो जब वो hit होके बनाता है, they try to increase the steam. तो coal के लिए continuously काम होता रहता है. Have you visited any deck of the big ship? Which one? अच्छा, you are on, sir. Yeah. So coal is used as underline direct source of heat and energy. Third point, manufacturing iron and steel. उधर लिखो smelting. Iron and steel के बाजू में लिखना smelting. What is smelting stands here? Extraction. Disadvantages, underline low calorific value.
What is calorific value and what is coal? क्या जरूरत क्या है? Every coal burns with some intent. और वो इंटेंट किसके ऊपर डिपेंड है? उसका कैलोरीज कितना जल्दी बर्न होता है. Which is the highest calorific value then? Anthracite है ना. It burns very slow and it will burn very steady. अपना पीक कैसा बर्न होगा? तो आपने आप लोगों को दिवाली में कुछ स्नेक का जैसा बर्न करते देखा है. तुरंत बर्न हो जाए बट लॉट ऑफ स्मोक. 2 घंटे का काम है वो आधा घंटे में पीक खत्म भी हो. Whereas anthracite is not like that. And anthracite वैसे भी इंडिया में बहुत कम है. They have limited reserves, especially Damodar Valley है in West Bengal and little bit of that area. And let us go to the next point. Coal is large scale pollution. Next, scattered in small amount. Underline that word scattered. Cost of production and transportation is very high. Quite high को cut करो. I am waiting here. I've gone little bit fast for coal. Please read it. Either in volume or in textbook. You have any points, please ask. It's one big module. So you have any detailed questions? So please ask. Okay, maps of India, did we do all the maps? Not all the maps. So next week, shall we do some maps? Please bring maps to India. When other branch asks me, sir, we need to do some preparations. Check अगर कहीं से कुछ points मिल जाएगा where you are unable to understand, please ask me. So there are the highlights you to remember 4 types of coal, which is best, which is etc. etc. Okay, that is very important. Shall we go to the second one? Okay. Now we are moving away from, we are directly having petroleum, underline that. Complex mixture of hydrocarbons. Second, obtained from sedimentary rocks. Underline mineral oil. Word petroleum, देखो उसका नाम क्या है? Oleum and petra. Petrol, petra and oleum. Next, not even tiniest part, वो भी नहीं चाहिए. Third, next point चले जाओ. Liquid petroleum is called, circle that word, crude oil. And it is natural gas, वो सब ठीक है. Open bracket, क्या क्या मिलता है? Okay, what is this lubricant? We get it from petroleum. Which lubricants? आपके घर में 2-wheeler 4-wheeler यूज होता है ना, आप हमेशा कुछ इंजन ऑयल का बात करते हो, क्या है वो? lubricant भी है. You know what are 2T oil, 4T oil, engine oil? Which mode of transport use the best or high quality fuel? Aviation, especially airplane. And बोलते कि उसमें एक ड्रॉप भर भी पानी नहीं रहना चाहिए जब वो पेट्रोल भरते हैं. So it is very dangerous. Okay, let's proceed. Then come to distribution. Star mark डालना मुंबई हाई के लिए. And company का नाम अरेबियन सी के ब्रैकेट में लिखना. Which company में मुंबई हाई is working? ONGC. Heard of this? Full form क्या है? Maybe one of your parents might be working. Oil and Natural Gas Corporation. लिखो लिखो एग्जाम में आता है. Oil and Natural Gas Corporation.
बहुत सारा फैमिलीज खारकर और पनवेल में है ONGC फैमिलीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सेकेंड, असम में आ जाओ, फर्स्ट इज डिग बॉय, अंडरलाइन करो, एंड आई डोंट नो वेयर यू गेट द स्पेस, यू राइट इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, डिग बॉय, इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, and ये सब important है ना, अरकतिया, मोरान, गुजरात वेरी इंपॉर्टेंट, अंकलेश्वर एंड कलोल, एंड बाकी चलेगा। Advantage, when I'm doing map work, remember me, I'll do this also, okay? Petroleum underline high density, that's enough. What about 1 kilogram can generate how much kilocalorie? 10,000 kilocalorie of energy. It is an underline liquid form. Transportation is easy, pipes. Broad area of application. इसको highlight ही करो. Why petroleum has a broad area of application? As per its refinery process, we get lots of products. है ना? And it is used. You know something called as synthetic rubber. I think जो rubber slippers हम पहनते हैं, वो भी petroleum का बाई प्रोडक्ट है, मालूम है? अब वो क्या है? पेट्रोकेमिकल कंपनी, PCL बोलता है, वो भी पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। Let's go to, it is used as fuel and its fuel derivatives, a nice word, open bracket, ethane, diesel, gasoline, देखो jet fuel आया, kerosene and LPG, close bracket. Come to the next point. Petroleum after refining is used as, underline this, raw materials for various, this is what I was speaking, petrochemicals. देखो पहला ही वर्ड सिंथेटिक रबड़ ही है, ओपन ब्रैकेट, polystyrene, I don't know where it is used, PVC everyone knows, plastic pipes, phenol, gasoline, carbon black, printing ink, film photography, cosmetic paints, oh my god, varnishes, lubricating oil, paraffin wax, ये पूरा lubricants है। Then go to the last point, petroleum is used as, underline, power generation. एक काम करो, put one question in your notebook and answer इधर ही है, ये advantages के अंदर ही है। Why? I'll give you the why petroleum industry. Why petroleum industry is referred as look into the board. Am I using the correct spelling? A nodal industry. I will only explain the meaning. By next week, I want everyone writing the answers from your volume or the textbooks. What does it mean, nodal industry का मतलब क्या है? You remember our iron and steel industry? I told us what? Backbone. अभी देखो petroleum जो है, you see what is that number of products it is seeing? Cosmetics में भी है. Even for pharmaceuticals was also there. So in the absence of this industry, the entire industrial structure will lack some of the other raw material. I was talking to one of my chemistry teacher. He is Abhay, very young teacher under me. I was asking him what is RE minerals, chemistry professor. Anybody knows what is RE? Rare earth minerals सुना है? अभी आपको chemistry में जब भी आएगा इसके बारे में research करना अच्छे से, and इसका कुछ course वगैरह मिलेगा कर लो। अभी चाइना, अमेरिका is stopping rare earth minerals to India, और इंडिया खुद अपना माइंस बना रहा है। You know, rare earth का मतलब क्या है? मैंने जितना मैंने साइंस पढ़ा है, जैसे कि सर हर मिनरल्स में ही रहता है, बट इनका अमाउंट ऑलमोस्ट 0.01 रहता है। ये टोल्ड मी सम एग्जांपल आल्सो। अभी इंडिया खुद अपना माइंस बना रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो जितना सारा मिनरल्स बनता है ना, उसमें हर जगह ये रेयर अर्थ मिनरल्स दिखता है। एंड इंडिया हैज आल्सो गॉट अ बिग बूटी ऑफ पेट्रोलियम इन अंडमान, आई थिंक सम पार्ट ऑफ अंडमान। अभी बहुत जल्दी इंडिया उसको रिफाइनिंग स्टार्ट करेगा। हम शायद अंडमान से अहमद एंड अब्दुल शेख को आते हुए देख सकते हैं, शेख अभी भी tons and tons of petroleum. So whenever we talk petroleum industry, you remember which is which industry?
नोडल इंडस्ट्री. व्हाट इज नोडल? सर हर एक इंडस्ट्री का एक पॉइंट इस इंडस्ट्री से जाता है. In the absence of this industry, the other industry will be incomplete. आप बोलेगा सर एग्रीकल्चर में किधर ये यूज होता है? Is agriculture and petroleum industry connected? No. हाँ, good. Yes, sir. अरे मोटर पंप works on diesel. है ना? Drawing waters, what will you do? तो देखो मैं तो बोलता हूँ आपका और मेरा लाइफ भी इसी से जुड़ा है. तो हमारा लाइफ भी जुड़ा है. All the chemical products that you get it through transport only. अभी इंडिया हमारा सोलर पावर बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा. और ईवी जो चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड में, इंडिया का जो मेन सप्लाई ऑफ बैटरीज है ना, चाइना हमको स्पेयर पार्ट्स नहीं देता है. तो इंडिया इज अनेबल टू मेक द ईवी बैटरीज. वरना तो इंडिया 2 साल के अंदर चाइना को हरा देगा बैटरीज बनाने में, बिकॉज टाटा एंड महिंद्रा आर गोइंग टू बिकम द ईवी मार्केट. यू नो व्हाट इज ईवी आई एम टॉकिंग? आजकल हर जगह देयर इज वन बजाज का कोई तो ब्रांड है जो ईवी का बनाने का कोशिश किया, बट इट वाज अ फेलियर. So what I'm trying to say, matlab it's a very cheap bicycle, but other bicycles are there which are a bit costly, but they are selling also. So that is what we call as which industry? Petroleum as. Come on. Will you be able to write the answer? I expect that. Let's go to disadvantages. You write leaks of natural gas. Very dangerous. Underline explosions of fire. Come to second point. For use as fuels, open bracket, methane. Can I say CH4 there? Write there CH4. Results may in many products, byproducts. इसमें क्या है? अरे बाबा, अच्छा उन लोग ने एग्जाम्पल दिया है. Like all fossil fuels, underline natural gas, though found in abundance, but circle the word non-renewable. Next. These infrastructural natural gas production and distribution, underline fairly expensive. Only underline the word which I am saying, fairly expensive. What you will be writing? Production and distribution. And last, natural gas used as, underline, fuel in vehicles. I'm here also waiting, please check. I jumped up, I think, from petroleum. ठीक है, वही मैं भी बोल रहा हूँ यार, ये natural gas. चलो, extracting and burning petroleum. डायरेक्टली लिख दो पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, वो सब लिखने का जरूरत नहीं. सेकेंड पॉइंट, हाईली इन्फ्लेमेबल. कॉज फायर के जगह पर लिखो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, कॉस्ट आर हाई लिखा है ना, उधर लिखो इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट. इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट दोनों हाई है इसका. पेट्रोलियम अंडरलाइन, फॉसिल एंड नॉन रिन्यूएबल. ये फॉसिल रहने के बाद भी नॉन रिन्यूएबल क्यों है? Petroleum, they are saying fossil fuel, है ना? Then how it is a non-renewable then? It will take millions and millions of years. Very simple. Renewable. So its availability and limited. Last point. Extraction or transportation. Problem क्या है? Oil spills. बस. So write one question. Now only you can finish writing. Looking at that. उसके आगे मैं नहीं करूँ. Briefly list out. Advantages and disadvantages. Briefly list out advantages and disadvantages of mineral oil production. Come on, ये question बहुत important है. List out advantages and disadvantages of mineral oil production. अभी जो लिखा अभी लिख दो. Very good. फर्स्ट 2 लाइन लिखना. पेट्रोलियम क्या है, वो जो फर्स्ट पैरा में मैंने मार्क किया ना, वो लिखो.
fossil fuel है. Directly don't jump into advantages and disadvantages. Start writing. Who don't have the volume? Anybody need my volume can take it. Mind your film derivative apps preparing maps next week. One lecture is finished off. Or women or the maps. How many you can bring? Many, huh? कोई मतलब ना people bring slow. लादा. Volume लेकर आओ. बस volume के flow आकर मैं ICSE का स्किल से भी निकला. Remind me of certain videos next week, especially of ONGC. क्या हो गया क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई तो वेस्टिंग का तू भी नहीं लिख रहा है हाँ तो वॉल्यूम में लिख चल वेस्ट नहीं करने का क्यों नहीं लाया नोटबुक वेरी बैड डोंट वेस्ट द टाइम ना एवरीवन इज राइटिंग वो तो नीड में यार मैं बोल के डर गया लेट पॉइंट्स ढूंढ किधर है अच्छा वॉल्यूम में ले इधर है ये ले हाँ तो वो नहीं है तो देख जब टाइम मिल रहा है डोंट वेस्ट इट at least one answer in one lecture you are writing that's good sign for me yeah you have written इधर देखो कोई अभी तक शुरू ही नहीं किया एक बच्चे ने तो लिख दी गुड गर्ल give me the hey what is this write a full sentence how do I understand this word really sure na Android high density liquid form used as for ये इतना भी नहीं चाहिए और थोड़ा बदल लिखो and where is the issue of where? He has only written two words in one point. That's okay, but elaborate it, elaborate. Not bad. Good. That's high. Full sentence. So how many are without the fair notebooks today? 1, 2, or one may add? I should start checking the notebooks. Next week, complete the book and bring. He's looking at his face and writing. Yeah, God only knows.
Any of the Sundays, my paper is coming. Last Sunday. कौन सा था? Chapter. Climate अभी हुआ. अरे ये तो बहुत लेट हो रहा है. उसके पहले और आगे कोई टेस्ट नहीं हुआ. ये लोग नहीं बोल रहा और एक ही दिन में हुआ. So shall I tell them which papers are taking maths every Sunday? Relax. बंद करो. मत लिखो all the time. Which papers are taking maths? Maths and science is there. Every Saturday Sunday मतलब every Sunday रहता ही. You want me to tell them कि जरा ज्योग्राफी का frequency बढ़ाओ? Because अपना पोर्शन भी तो बहुत आगे है. तीनों को कैसा उनका एक साइकिल रहता है. Accordingly they go. And school exams, especially that Sanjeevni, na, tell the department well in advance which day to which day. You are planning to come or not to come? Exams, because इधर तो lecture चलता रहेगा. Every time the ICSE का school का exam is the issue. और कुछ नहीं. So what's new in your life? चलो एक मिनट है. कैसा चल रहा है studies everyone? हाँ hello कुछ बोलो. Hi my dear girls. No pressures. Happy? She's happy, I think, smiling. And my dear boys, लाइफ में कौन आया? पढ़ाई के अलावा कौन? तुरंत लड़कियों में हंसी आती. Your unit test के बाद जो अगस्त का एग्जाम रहेगा ना, they will be including how much portion did they tell you well in advance? I think they will very quickly include half of your syllabus. वो देख लो. And मुझे एक लिस्ट दे देना. I will